गुड इवनिंग एवरीबॉडी इलेक्ट्रिशियन स्टडी पॉइंट रे आपन स्वागत। आज आम पढ़ा डीसी जनरेटर जोटा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु 4 रु 5 मार्क क्वेश्चन आसी थाए। सो जो माने मोर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रो वीडियो देखा चाहछंती से माने हमर इलेक्ट्रिशियन स्टडी पॉइंट मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड करंतु। डाउनलोड करिया सहित मेंबरशिप रे मते जॉइन भी करंतु। ता सहित यूट्यूब रो मते प्रोवाइड कराई जिवो किंतु यूट्यूब रे वीडियो आसे पे टिके के समय लेट हुए। एप्लिकेशन रे ऑन द स्पॉट संगे संगे बहुत ऑन द लाइव रे मते पढ़ा जाउची। लाइव रे मते तमे चाहे जदी क्लास भी कर पारिबो। ओके सो डीसी जनरेटर विषय जानिबा। डीसी जनरेटर कोन हम कोन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आज का डेट रे हम जहां भी पढुचे एग्जाम क्रैक करिया पई पढुचे। सो एग्जाम को क्रैक करबा सबुठरे इंपोर्टेंट हैला प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग रे केबे हैला हम कोनोसी एग्जाम को क्रैक कर परबा नहीं। सो दैट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू केते क्वेश्चन पढुची को जगह क्वेश्चन आछू दैट इज द वेरी वेरी इंपोर्टेंट। सो मो शॉर्ट नोट वर्तमान पढौची। शॉर्ट नोट पढ़िया सहित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मध्ये भी डिस्कशन होची जो मन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मध्ये देखि भी पारिबे प्रीवियस क्वेश्चन को। ओके चलो तो स्टार्ट करबा। डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर कहला में कोन बुझुचे। ओके small amount of a DC produced by a converter which convert alternating current into direct of a current। ता माने कोन कहूची ई कोन कहूची small amount of a DC produced by a converter। जो हमें कन्वर्टर यूज करूचे से कन्वर्टर रे कोन होची स्मॉल अमाउंट ऑफ डीसी प्रोड्यूस होची which convert alternating current into direct current। जहा फल रे हम कन्वर्ट करूचे कोन alternating current to direct current। but large amount of a DC generator by a DC generator which convert mechanical energy into electrical। जदि हमें small amount of चाहूचे बा small amount of produce of a DC generator convert केमति करा हबो by convert in alternating current into direct current। सो जदि लार्ज अमाउंट ऑफ डीसी करंट दरकार पड़िबो ताहले हम कोन यूज करबा ना कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल ऑफ एनर्जी। सो वेरी सिंपल बुझिले। सो मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो कन्वर्ट कराउची दैट इज कॉल्ड ऑफ अ जनरेटर। सो प्रिंसिपल ऑफ अ डीसी जनरेटर कोन ना डीसी जनरेटर और डायनामो। सो मन रखिथिबो डीसी जनरेटर अन्य ना हैला डायनामो। सो डायनामो को वर्क्स ऑन द को रूल रे ना फैराडेस प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑफ इंडक्शन रूल रे काम करे। Faraday's principle of electromagnetics। So according to this of a principle कौन कहूची ना principle कहूची conductor rotate in a constant magnetic field। First principle is कौन conductor is rotate in a constant of a magnetic field in such way that conductor caught a जहाँ फल की conductor कौन करेगा caught a magnetic field lines and the electric EMF will be induced in that। Second point कौन कहू सेकंड the Fleming right hand rules is used to find out the direction of induced EMF। so मन रखिथिबो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स एगुटा ही क्वेश्चन आसे बारंबार क्वेश्चन मते पचारे फ्लेमिंग राइट हैंड ऑफ रूल्स। ओके कौन पे यूज करते हैं ना इन डायरेक्शन ऑफ फाइंड आउट करे पे डायरेक्शन ऑफ कहार ना इंड्यूस ऑफ ईएमएफ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ऑफ ईएमएफ। सो प्रिंसिपल कौन जानिले अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल हैला हमरा ओटे जदी कंडक्टर इज रोटेट करबो ने कहा पे ना कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पर। ओके इन सच वे दैट जहां फल की कंडक्टर करता मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइंस ऑफ magnetic fields of lines को cut करिवा जहा फल कि EMF will be induced that of a conductor। okay so in a generator maximum value of EMF is generated within the coil axis of a 90 degree। मन रखिते जो coil of axis of maximum of value बा maximum voltage कोते रे ना at 90 degree रे हमर maximum value of produce होता है field axis रे। okay so next देखबा construction of a part। so part कहे गले so दिस ने एडा चुटा हमर जनरेटर मशीन डीसी मशीन रो जहा फल कि हम डीसी मशीन रो ओवरऑल ऑफ पार्ट कोन हम को डिस्कशन करछु। so one part is yoke, second is magnetic pole core, pole winding, pole switch, end pole and a terminal box। so all the part are कोन कहउ छै ना स्टार्टर पार्ट बोले हम कहउ छै। and another point कोन आर्मेचर कोर हो आर्मेचर टीथ हो आर्मेचर स्लॉट हो आर्मेचर वाइंडिंग कम्यूटेटर बेयरिंग शाफ्ट and बस। so all the part of कोन कहउ छै ना रोटर पार्ट बोले हम कहउ छै। so जनरेटर बेसिकली हम देटा पार्ट जानिले गुटो छै स्टार्टर पार्ट आउट हो छै हमर रोटर पार्ट। चलंत हम स्टार्टर पार्ट विषय जानिबा और रोटर पार्ट विषय हम जानिबा। ओके हां नेक्स्ट पॉइंट कोन देस देखिबा स्टार्टर पार्ट विषय हम जानिया कोन ना स्टार्टर हैला कोन यक। फर्स्ट स्टार्टर पार्ट हैला हमर यक इज द कहउथरे ना लार्ज डीसी मशीन इज मेड अप ऑफ कास्ट स्टील। मन रखिथिबो एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लार्ज डीसी मशीन कोथे तयारी थे ना कास्ट स्टील और रोल्ड स्टील एंड स्मॉल ऑफ डीसी मशीन
कोथरे थे ना कास्ट आयरन रे स्मॉल टा कोथरे थे ना कास्ट आयरन रे ही थे तो यक कौन है सो समस्त को क्लियरली देखा जाउची ना देखा जाउनी मते कहीं जने कंफर्म करेबो पिक्चर ऑफ क्लियरली देखा जाउछ तो एबे देखिले समस्त देखा जाउची क्लियरली ओके विकास क्लियरली देखा जाउची हम वॉइस भी क्लियरली सुबुची विकास ओके ठीक है थैंक यू सो दैट यक आनिले यक रा कोन लास्ट डीसी मशीन रे कोते तयारी थो ना कास्ट स्टील रे तयारी थो एंड और किंबा रोल स्टील रे तयारी हिथो स्मॉल डीसी मशीन रे कोते थो ना कास्ट आयरन रे यूज हिथो द यक कंप्लीट द मैग्नेटिक सर्किट सो यक रा काम कोन यक रा काम हला कंप्लीट द मैग्नेटिक सर्किट और फ्लक्स पाथ बा फ्लक्स पाथ को से कंप्लीट करिया पई हमें यक को व्यवहार करू छी मन रखते वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सो इट प्रोवाइड ए मैकेनिकल ऑफ सपोर्ट सो स्टार्टर पार्ट रे हमर जो यक यूज करछे यकटा कोन पे व्यवहार करछे ना गोटे मेकानिकल सपोर्ट पे मध्य प्रोवाइड करछे एंड टू प्रोटेक्ट द इनर पार्ट और आउटर एटमॉस्फेयर को कंडीशन सो इनर पार्ट को आउटर एटमॉस्फेयर ऑफ कंडीशन रो से मध्य रक्षा करूछ किए ना यक second point है magnetic pole core and magnetic of a pole shoes so the pole core and pole shoes of a small machine are made by in a cast iron যদি স্মল মেশিনে দেখিবা তাহলে পোল কোর হো কি পোল সুজ হো আমাকে মেটাল তৈরি দিও না কাস্ট আয়রন মেটাল তৈরি দিও and the pole core and pole shoes of a medium and large machine are made up in anneal steel or lamination of steel point me noted যদি বড় मेसिन हो कि मीडियम टाइप ऑफ मेसिन हो तो को मेटल तयारी थो एनेलिंग स्टील मेटल रे तयारी हेथिबो सो मैग्नेटिक पोल कोर कोन इट डिस्ट्रीब्यूट द फ्लक्स व्हिच प्रोड्यूस्ड बाय द मेन मैग्नेटिक पोल सो मैग्नेटिक पोल हाउस जो काम हैला इट डिस्ट्रीब्यूट द फ्लक्स which is produced by the main magnetic of poles uniformly and over the circumference of the armature jafar over the kahara na circumference of the armature and second point है it reduce the air gap ये कौन करिबा ना air gap को reduce कर it reduce the air gap by which lowest reluctance path is produced मन रखिथिबो magnetic pole हैला कौन सदा low reluctance magnetic path कौन है low reluctance एई पॉइंट मन रखिथिबो जो हमर magnetic ये पोल सोर्स कहउछे से सोर्स टा low reluctance सदा बढ़ितो and it produce is support the pole winding and prevent the form of slipping and sliding on the pole core so pole core टा हमर कोन हेतो स्लिपिंग और स्लाइडिंग दूर रक्षा करता है कोथरे पोल वाइंडिंग रे सो जदी इट सपोर्ट द पोल वाइंडिंग सो पोल वाइंडिंग को हम कोन करे थे ना वाइंडिंग करे थे एंड प्रिवेंट फ्रॉम द स्लिपिंग्स तापर जदी स्लिप ना वाइंडिंग स्लिप ना होबो किबा स्लाइडिंग ना होबो पोल कोर ऊपर ता मध्ये हमको हेल्प करता है ओके so next point is a magnetic of a pole winding now magnetic pole winding is also called as a exciting winding magnetic pole winding हम कौन कहउछ अदर वर्ड रे एक्साइटिंग ऑफ वाइंडिंग बोली कहउछ किबा अदर वर्ड हम कौन कहउछ ना फील्ड वाइंडिंग बोली हम कहउछ एक्साइटिंग वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग बोली हम कहउछ ओके नेक्स्ट पॉइंट देखिए कौन इट इज मेड फ्रॉम इन ए कॉपर सो एटा को मटेरियल तयारी थे ना कॉपर मेटल तयारी थे आउ को मटेरियल तयारी थे ना एल्युमिनियम ऑफ एनामिल ऑफ वायर सुपर एनामिल ऑफ कॉपर वायर रे तयारी थे सो खास करी को वाइंडिंग जतक को मटेरियल तयारी थे सुपर एनामिल ऑफ कॉपर वायर रे तयारी थे किंतु वर्तमान मार्केट रे एल्युमिनियम वायर मध्ये आसी गलानी ओके सो एंड प्लेट कौन ना द एंड प्लेट hold the bearing in which the shaft of a armature of the rotate से एंड प्लेट काम कोन ना एंड प्लेट काम होला होल्ड धरि रखि थाए कहा को धरि रखि थाए ना बेयरिंग को इन व्हिच द शाफ्ट ऑफ द आर्मेचर इज रोटेट जा फल कि शाफ्ट डा आर्मेचर से कोन त रोटेट होथुवा and the end plate is maintain a uniform of a air gap so end plate ता सदा कोन है तो uniform of a air gap को मेंटेन करता है and between the का मध्ये ना आर्मेचर और पोल शूज सो आर्मेचर और पोल शूज भीतर जो हमर एयर गैप रे तयार करबो से एयर गैप को से यूनिफॉर्मली कोन है मेंटेन करके रखि सो नेक्स्ट पॉइंट देखबा रोटर पार्ट कोन ना आर्मेचर कोर and the armature of a core is rotating of a cylindrical part of a DC machine so armature core टा हम कोन कहछे गोटे rotating cylindrical part
जार मेड ऑफ सर्कुलर शीट ऑफ द सिलिकॉन स्टील को मटेरियल तयारी थाए ना सिलिकॉन स्टील तार थिकनेस केते रहता ना 0.35 to 0.5 मिलीमीटर ऑफ thickness थाए and it provide the support the conductor by holding the armature of the coil winding in a slot out main important है कौन it support करे कहाँ को ना conductor support to the conductor means support कौन बोलते हैं armature को by holding the armature coil winding कौन armature coil winding को होल्ड करके रखिया पाई ये हमको सपोर्ट करते हैं सो कंडक्टर मीनिंग एटा बुझिबो काहा को ना आर्मेचर को बुझिबो मन रखिथिबो सदा बेले कंडक्टर रोटेटिंग रे कंडक्टर माने हला आर्मेचर सो नेक्स्ट पॉइंट देखिबा कम्यूटेटर को ना ए कम्यूटेटर इज ए मैकेनिकल ऑफ रेक्टिफायर सो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कम्यूटेटर इज ए को टाइप ऑफ रेक्टिफायर ना मैकेनिकल ऑफ रेक्टिफायर व्हिच कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट एसी टू डीसी को जेके कन्वर्ट करे थे सो इट इज मेड इन ए सिलिंड्रिकल शेप ये कुमते तयारी था ना सिलिंड्रिकल ऑफ शेप तयारी था और टैपेड इन ए सेगमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ कॉपर जा फले का कोन थे ना टैपेड हेता है सेगमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ कॉपर एंड इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग ऑफ मेटल सो ये कोन कहूची से कहूची कम्यूटेटर डामर कोन हेता है ना मेड इन ए सिलिंड्रिकल शेप तयारी हितबो जोटा के सेगमेंट और टैपेड हितबो और हाइड्रोजन कॉपर सो मेटल कोथरे हितबो ना कम्यूटेटर सदाला हाइड्रोजन ऑफ कॉपर मेटल तयारी हितबो एंड इलेक्ट्रिकल इज ए कंडक्टिव मेटल सो कॉपर मेटल जेहेतु से कोन तो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मेटल हितबो एंड स्प्लिट रिंग आर आल्सो नोन एज अ कम्यूटेटर स्प्लिट रिंग को हमें अदर वर्ड रे मध्य कोन कहूचे कम्यूटेटर बोली कहूचे and a DC machine the number of a commutator segment equal to the number of a coil so DC machine रे number of a segment is equal to number of a कहर ये number of a coil very important point है दबा okay next one जानिबा brush gear कौन the device that smoothly operated and control the brush is called as the brush gear जो डिवाइस स्मूथली कौन है ना स्मूथली ऑपरेटेड है एंड कंट्रोल द ब्रश को कौन तो कंट्रोल कर ब्रश गियर and main part of the brush gear is a brush holder so main part of a brush gear कौन है brush holder होची main part and it maintain from the contact of the carbon brush जा फले ये maintain करे contact of the carbon brush with the commutator surface in a all situation so प्रत्येक जेकोसी सिचुएशन रे कौन तो कार्बन ब्रश को कांटेक्ट है कि थिबो जा फले कि ब्रश गियर भितरे कौन ते ब्रश होल्डर थाए से होल्डर भितरे हमर ब्रश थाए से ब्रश ता कनेक्टिविटी का से तो ब्रश ता हमर कनेक्टिविटी कार्बन ब्रश सहित हितबो ओके सो देखिबा आगु को पिक्चर लिखल भी हबो बोले वीडियो रे मते देखेबी ओके नेक्स्ट पॉइंट देखिबा कार्बन ब्रश कौन ना कार्बन ब्रश आट इज ए गुड लुब्रिकेंट ऑफ द कम्यूटेटर सो कार्बन ब्रश का में गुड लुब्रिकेंट ऑफ द कम्यूटेटर बोले हमें कहूचे एंड हाँ it reduce the friction between kahara na carbon brushes and surface of the commutator so commutator surface और carbon brush मतरे जो friction रहता है दाबे बहुत कम रहता है and carbon brush is collect current from the commutator into DC generator so carbon brush टा कौन करता है ना collect to the current कोठे ना commutator रो so in a DC generator and it made of a carbon graphite it कोथरे तयारी थे ना it made of a carbon metal है पर नॉल graphite metal है पर so thus there is a less wear of the carbon brush on the commutator सेइत पे हमें कौन कहते less wear बहुत कम यूज स्क्वायर दे of the carbon brush on the commutator surface carbon brush को हमें बहुत कम व्यवहार कराउचे less wear of the कहां पर है ना commutator of the surface नेक्स्ट पॉइंट देखिबा शाफ्ट कहले कोन होता तो शाफ्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल मशीन इज यूजुअली सिलिंड्रिकल एंड शाफ्ट इज सिलिंड्रिकल सो हमें जो शाफ्ट हमें कहूचे सिलिंड्रिकल मशीन रो हां the shaft of electrical machine is usually cylindrical and shaft is made of a milestone shaft को metal तयारी थो milestone material तयारी थो on which the heavy armature and commutator are mounted जा फले कोन थो हेमे armature और commutator हमर कोन माउंटेड करा जाई थो कोन करै तो माउंटेड करा जाई थो so armature coil or armature winding so it coils are made in a combining of many turns so armature जो coil कहूचे बा armature winding कहूचे से कोन बहुत कंबाइंड हे के रहिछि many turn अधिक टर्न कंबाइंड हे के रहिछि and each turn are made by a combining of two conductor प्रत्येक टर्न each turn are made by a two conductor दुईटा कंडक्टर सहित हमें तुलना कर जाइछि so next point देखिबा हमर टाइप ऑफ bearing so bearing हमें कोठी यूजेस करछे
हाँ विकास कौन कहूच राइजिंग वॉइस विकास कुह कौन कहूच सर जो कम्यूटेटर अच्छी से कौन सर एसी को डीसी कन्वर्ट कर ना अलग कौन काम कर हाँ विकास तुम वॉइस टा क्लियरली सुबिले ना आउथरे सर कम्यूटेटर कौन एसी को डीसी कन्वर्ट कर देख कम्यूटेटर देख आर्मेचर टा हैला एसी ऑलवेज इन एसी ओके सो सेटा आर्मेचर सहित हमर कम्यूटेटर लागि रहिछ सो आर्मेचर रो जो कम्यूटेटर को ही कन्वर्ट करेबो सो कम्यूटेटर इज हम ओनली ऑफ कन्वर्टर हिसाब रे हम यूज करू बुझियला आज्ञा So next point is a type of a bearing. So bearing माने कौन? So bearing different type of a bearing are there. So slab bearing अच्छी, ball bearing भी अच्छी, roller bearing ମଧ୍ୟ भी अच्छी, and barbed metal boss bearing ମଧ୍ୟ अच्छी. So ସେଥି ମଧ୍ୟରେ ଜାଣିବା କୋ bearing କୋଉଠି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ. Slab bearing ଆମର ହେଲା this type of a bush bearing made in a gun metal. So ଏଇ जो slab bearing କହୁଛେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ତ bush bearing ଯୋଉଠି bush bearing यूजेस करा होची सेटा को हम स्लेब बेरिंग बोली कहउछे एंड इत को मेटल तयारी थो दिस इज गन मेटल रे तयारी थो मन रखिथो बुश बेरिंग ला को मेटल तयारी गन मेटल एंड इट इज यूज इन ए वेरी स्मॉल मशीन सो बहुत स्मॉल मशीन रे आपको यूज इन ए वेरी स्मॉल मशीन छोटे छोटे मशीन व्यवहार करा जाए हुज रोटेट हैव ए वेरी लेस वेट जहा फल रे कि बहुत वेट थो कोन बहुत लेस थो रोटर रो ओके हुज रोटर हैव ए वेरी लेस वेट जहा फल रोटर रो जेतु कम वेटेज थिबो सापड़े हमें आपको बुश बेरिंग यूजेस कराबो सो बॉल बेरिंग कोन ना द बॉल बेरिंग इज मेड ऑफ द बॉल बेरिंग इज मेड ऑफ इन स्टील मेटल रे हम ताको कोन यूज करछे ना बॉल बेरिंग यूज करछे एंड इट इज यूज इन ए स्मॉल एंड मीडियम साइज ऑफ मशीन छोटो आ मध्यम धरणर मशीन रे हमें आपको व्यवहार करछे हुज रोटर हैव ए नॉर्मल ऑफ जार रोटर सदा कोन थो नॉर्मल ऑफ वेट थिबो एंड रोलर बेरिंग एंड द रोलर बेरिंग यूज्ड in it are also made of in steel so roller bearing जोटा तयारी होची से भी मध्य हमर को मेटल तयारी थो स्टील मेटल तयारी हेतु and it is used in a medium size of a machine so medium size of a machine रा को व्यवहार कर देता को बेरिंग व्यवहार करता ना रोलर बेरिंग so machine with a normal rotor of weight जोटा के machine रो कोन थो normal rotor machine जो rotor weight थो normal थो से जगह रे हम कोन यूज करबा ना रोलर बेरिंग हम व्यवहार करि परिबा so barbed or metal boss bearing kono na barbed or metal bossing is made in a two parts dita parts hoiche and this bearing is used in a very large machine so bada machine mane kre हम कोन यूज करछे barbed metal boss bearing very important question ei point eta so very important मन रखिथिबो बड़ा machine large type of machine रे barbed metal boss bearing हमें यूज से करूछे ओके जेटा केतेटा बार ना दीटा पार्ट रहिছে and this bearing is used in a very large machine so next point of देखिबा electromotive force equation in a DC generator so हमें समस्त जानि छै EMF ऑफ इक्वेशन जोडे कि हमर केमिति प्रोड्यूस करा जाउछि so यदि आपको डेराइव जानियो चाहछन थ्योरी क्लास रे अटेंड करिवो से इजीली मते बुझै परिबे ओके so एबे देखिबा इजी मींस ऑफ हमें कोन इजी ऑफ जनरेटिंग ऑफ EMF ZP phi n by 60n so everybody know na Z माने कोन P माने कोन phi माने कोन n माने कोन एंड a माने कोन सो जदि हमें ए जिंसरा वैल्यू ऑफ डाटा जानि परिबानी ताहाले हमें कोनोसी पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर परिबा नाही सो दिस वन इज very of importance so in case of a lap winding जदि हमें lap winding कहउसे a is equal to always remember that of p so a सहित कोन तो always in a p then easy कोन आसबा phi znp बा zp phi n by 60 into p रे ही आसीबो जेटा कि हमें एटा कि a आउ p इक्वल हे गेला हमर कैंसलेशन हे जिवो जा फल कोन आसीबो ना इज इक्वल टू z phi n by 60 z phi n by 60 आसीबो ओके अच्छा द केमिति एटा डेराइव होची देखो इज इक्वल टू phi z n p by 60a सो a माने हम कोन ना a माने हला p यदि मोर a माने p होची इज इक्वल टू phi z n p by 60p हबो सो p कटि गला पिटि गला हम कोन रहबो ना phi z n by 60 ही रहबो जोटा कि phi z n by 60 ओके देन इन केस ऑफ वेव वाइंडिंग कोन रहला वेव वाइंडिंग रे a इज इक्वल टू सदा बेले 2 ही रहबो मन रखितो वेव वाइंडिंग रे a इज इक्वल टू 2 जदि वेव वाइंडिंग रहला देखो e माने कोन लैप वाइंडिंग एठे el माने लैप वाइंडिंग हो
बा मु इजी मते कहि परिबि बिकॉज़ दैट मु लैप वाइंडिंग करछि ईएमएफ ऑफ जनरेटर मते कहि परिबि किछि असुविधा नाही सो ईडब्ल्यू माने हला कोन ईओ वेव वाइंडिंग ईडब्ल्यू हला वेव वाइंडिंग रे मते सेंति कोन जेड पी 5 जेड एन पी बाय 60 जोटा 5 जेड एन पी बाय 60 ए जानछि सो ए र वैल्यू एडी केते रहछि ना 2 रहछि सो आपको आंसर कोन सो 5 जेड एन पी बाय 60 into 2 or otherwise से हमें कौन कहे 5 ZNP भाई कितना से 120 जोड़ा कि ए वैल्यू टा हमें जानेंगे ओके सो इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3 ये वाला इक्वेशन 3 और ये या पूर्व इक्वेशन ऑफ 2 गोटे लैप वाइंडिंग रो गोटे वेव वाइंडिंग रो सो वेव वाइंडिंग ईएमएफ इक्वल टू p by 2 into लैप वाइंडिंग ऑफ सो यदि वेव वाइंडिंग रो ईएमएफ यदि क्वेश्चन पचारियो केते सो वेव वाइंडिंग रो ईएमएफ केते आसीबो ईएमएफ इज इक्वल टू p by 2 into लैप वाइंडिंग रो ईएमएफ मन रखतो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एडा ओके वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन so next point देखिबा difference between a lap winding and wave winding so coil lead are overlap each other and a coil lead are connected to like series circuit so wave winding को series circuit connecting हेतिबो या हमर कोन त lap winding overlap so this is called as a parallel winding and this is called as a series winding low emf and a high current will generate high emf and a low current is so ei question रा एग्जाम रे ही पकाए सदा बेले मन रखिथबो ei question रा ही very very important question एथु ही एग्जाम आसे low emf and a high emf and a low current so here the number of a parallel path is equal to the number of a pole जोटा कि हमें पढ़िले and here the number of a parallel path is always equal to केते 2 and it is a completely winding so mechanical balance so is it गोटे completely winding रोची so एटा गोटे mechanically balance and is incompletely winding so mechanically कोन हबो unbalance रहबो so point be noted that wave winding कोन हबो unbalance हबो and lap winding हला balance so that number of a pole pitch so pole pitch हमें करिए केमते number of a armature slot by number of a pole ज armature slot by पोल बोले हमें मन रखिथबा निहाती जरी ये भी मदर वेरी वेरी इंपोर्टेंट इथरे एग्जाम रे क्वेश्चन ही पचार प्रॉब्लम ओके नेक्स्ट पढ़िया हमर क्लासिफिकेशन ऑफ अ डीसी जनरेटर सो डीसी जनरेटर क्लासिफिकेशन कराई छै एक्चुअली टू टाइप्स वन इज सेपरेटली टाइप एक्साइटेड जनरेटर सेकंड इज हमर सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर so separately excited और self excited मधुर कोन ना separately self excited generator categories कराई दी प्रकार गोटे होची permanent of magnetic of generator आउट होची हमर कोन electromagnetic of generator मन रखिथिबो so self excited categories केते करछि ना दी भाग रे व्यक्त करछि कोन कोन गोटे होची हमर permanent magnetic generator आउट होची electromagnetic of generator so the permanent magnetic generator और electromagnetic generator categories कराछि तीन भाग रे कोन कोन गोटे होची शॉर्ट जनरेटर गोटे होची हमर सीरीज जनरेटर आउट होची हमर कोन कंपाउंड ऑफ जनरेटर सीरीज शॉर्ट एंड कंपाउंड जनरेटर ओके सो शॉर्ट सीरीज शॉर्ट एंड कंपाउंड जनरेटर रु और मद कैटेगरीज कराछि काहा को ना कंपाउंड जनरेटर को कोन कंपाउंड जनरेटर कैटेगरी छै ना दी प्रकार कम्युनिटी ऑफ कंपाउंड जनरेटर differential of a compound generator community compound generator and a differential of a community compound generator so that akku madhya ahori madhya cumulative compound generator ko use karachi under compound level compound and a over compound of a generator so differential compound bahut rare uses kara jauchi ahori madhya category short community compound long shunt community compound okay short shunt of a differential compound and long shunt of a differential compound मन रखिथिबो ओके नेक्स्ट पॉइंट देखिबा हमें डीसी जनरेटर सो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर को सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर हमें गोटे डीसी सोर्स गोटे सेपरेटली दिया जाय था सो दैट फिगर ए फिगर ही एग्जाम रे ही पके दी ए फिगर्स पॉइंट मनोटर सो पछते व्हिच फिगर इज सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर तो फिगर दे दी तो चारटा अदरवाइज ए फिगर दे दी तो पचारियो को होछ सो आखि बंद करके देखियो जदी एक्सटर्नल ऑफ सोर्स लागि छि दैट इज कॉल्ड एज ऑफ कोन सेपरेटली एक्साइटेड ऑफ जनरेटर सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर रे वेरी वेरी केतला इंपोर्टेंट मन रखिया जरूरी कोन ना आर्मेचर करंट इज इक्वल टू लोड करंट फर्स्ट पॉइंट रिमेंबर दैट आर्मेचर करंट सदा कोन हो लोड करंट से तो बराबर हो आ टर्मिनल ऑफ वोल्टेज कोन रहबो ना Eg माइनस Ia into Ra Ia into Ra रहबो Eg माइनस Ia into Ra रहबो
आ जदि हमर एटा ब्रश ड्रॉप भी आछे निश्चित भाव एटा कोन आसीबो ना Eg माइनस Ia इनटू Ra माइनस ऑफ Bd बा ब्रश ड्रॉप बोली कहउछ ब्रश ब्रश ड्रॉप ओके ब्रश ड्रॉप बोली कहउछ बा ब्रश ड्रॉप वोल्टेज बोली मध्य अदर वर्ड से कहउछ सो ए तक पॉइंट मन रखथिबो सबुठार इंपोर्टेंट पॉइंट हला आर्मेचर करंट इज इक्वल टू लोड करंट सहित इक्वल रहथिबो सो डीसी शंट जनरेटर कोन ना डीसी शंट जनरेटर रे जतरा आर्मेचर सहित पैरेलल गोटे कॉइल थिबो दैट इज कॉल्ड अप शंट जनरेटर आउ कोन से हमर कॉइल नथिबो ओनली गोटे कॉइल पैरेलली कनेक्टेड हितो सेटा हम कोन कहउछे शंट जनरेटर बोली कहउछे एथरा Ia इज इक्वल कोन आसीबो Ia इज इक्वल टू शंट रो करंट प्लस लोड रो करंट दिना बराबर थिबो शंट करंट प्लस लोड करंट सेंति Vt बा टर्मिनल वोल्टेज कोन आसीबो सेंति Eg माइनस Ia इनटू Ra रहइबो ता से हमर जेते एटा आउट कोन रहइबो उल्टू सेम जिंस Eg माइनस Ia इनटू Ra माइनस ऑफ Vd बा वोल्टेज ब्रश ड्रॉप ब्रश ड्रॉप बा अदर वर्ड हम कोन को Vb ओके Vb बोले हमें कहउछे ओके सो नेक्स्ट डीसी सीरीज जनरेटर कोन डीसी सीरीज जनरेटर रे मन रखथिबो आर्मेचर सहित हम कोन तो सीरीज रे कनेक्टेड है सो एथरा Ia इज इक्वल टू IL इज इक्वल टू ISE सो फील्ड करंट लोड करंट सब इक्वल देन टर्मिनल वोल्टेज कोन आबा Vt इज इक्वल टू Eg माइनस Ia देखो Ia हैला Ra एंड Rse Ra प्लस Rse सो आर्मेचर रेजिस्टेंस प्लस सीरीज रेजिस्टेंस टा एडिंग हबो ओके सो हमें या पूर्व कोन लिखुतले ना हमर Ia into Ra रहउतला आर्मेचर कोन होतला Ia into Ra रहउतला किंतु एथिरे कोन हबो निश्चित रूप Rse टा ऐड हेकी रहिबो जोटा कि हमें एडिंग करके रखि पाए सो अदर वर्ड हम लिखि पारे कोन ना Eg माइनस Ia into Ra प्लस Rse माइनस ऑफ कोन आसे Vb बा वोल्टेज ऑफ ड्रॉप बोले हमें आसे सो नेक्स्ट पॉइंट को देखिए हमें कोन शॉर्ट शॉर्ट जनरेटर कोन ना शॉर्ट शॉर्ट जनरेटर रे हम देखो ये होछि कंपाउंड ऑफ जनरेटर जेटा कि हमरो इजीली देखो यार डायरेक्शन आर्मेचर रो एन है कि ये गोटे डायरेक्शन को पडु की जाईछि आउट डायरेक्शन हमरो शॉर्ट फील्ड की जाईछि सो जोटा कि हमरो शॉर्ट कराई तो शॉर्ट शॉर्ट बोली कहउछि सेटा कमे कोन होछ ना Ia इज इक्वल टू सदारे ISS प्लस ऑफ ISC सो आर्मेचर करंट सदारे कोन ना ISS प्लस ISC ये आधा पडु गसिबो आ करंट आधा फंड को मध्य जीवो सेंते टर्मिनल वोल्टेज कोन Vt इज इक्वल टू Eg माइनस Ia इनटू Ra माइनस ISC इनटू Rse सो ISC इनटू Rse सो देखो टर्मिनल वोल्टेज ओके सो दैट नेक्स्ट देखिए आउट भी मध्य हे परिबो कोन आउट हे परिबो ना Eg माइनस Ia इनटू Ra माइनस ISC into RSC minus of a drop BB बा वोल्टेज ड्रॉप बोले हमें कहउछे ओके सो नेक्स्ट पॉइंट को देखिए हम कोन लॉन्ग शंट ऑफ अ जनरेटर सो लॉन्ग शंट जनरेटर कोन कहउछे ना लॉन्ग शंट जनरेटर रे सेमति एडा हमर देखो कनेक्टेड हेछि का से त या पूर्व शॉर्ट सर्किट कोन थला एठी हमर रेजिस्टेंस थला सो ये मते कनेक्टेड हेछि आ माध्यम दे कि ही आसीबो दैट मींस ऑफ Ia is equal to ISS plus in IL ये तेरे मध्य शॉर्ट रो कोन थिला शॉर्ट रो मध्य Ia इज इक्वल केते ISS प्लस ISC थिला ISS प्लस ISC थिला एतरे कोन रहबो ना ISH प्लस IL ही रहबो ISH प्लस IL ही रहबो सेन Vt कोन आसीबो ना Vt आसीबो हमर Eg माइनस Ia इनटू Ra प्लस ऑफ Rsc ही आसीबो ओके देन ड्रॉप जदि आसीबला एटा हमर कोन हे जिवो एटा माइनस ऑफ वोल्टेज ड्रॉप भी हे जिवो ओके सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ देखिया कोन ओके सो हमें जहां भी जानिले वर्तमान सुधा टाइप ऑफ जनरेटर जो पढिले टाइप ऑफ जनरेटर रो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन जोटे कि एग्जाम रो 100% से जगह नहीं क्वेश्चन करे ओके सो पॉइंट बी नोटेड एबे हमें देखिबा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डीसी जनरेटर गोटे डीसी जनरेटर रो कैरेक्टरिस्टिक कोन रहया जरूरी सो थ्री टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक अछि तीन प्रकार कैरेक्टरिस्टिक्स मन रखथुबो गोटे जो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक गोटे अछि इंटरनल सर्किट कैरेक्टरिस्टिक गोटे अछि हमर एक्सटर्नल सर्किट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स को अदर वर्ड में कोन कहउछे
मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक कहूचे किंबा नो लोड कैरेक्टरिस्टिक मध्य कहूचे आ इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक का कोन कहूचे ना टोटल कैरेक्टरिस्टिक कहूचे आ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक कहूचे सो जदि आमे ओपन सर्किट कोन कहूचे नो लोड कहूचे ओपन सर्किट नो लोड मींस अब कहा कहा मध्ये रिलेशनशिप बुझेबा ना E0 वर्सेस ऑफ कहा तो फील्ड करंट E0 वर्सेस ऑफ फील्ड करंट मन रखथिबो का मध्ये रहितबो ना E0 वर्सेस ऑफ फील्ड करंट वर्सेस मध्ये कहा मध्ये रहते रिलेशन ओके सेमती इंटरनल कोन कहा हेतो ना Eg आउ Ia मध्ये रहे सो जदि एक्सटर्नल कोन हेतो ना Vt आउ IL मध्ये मन रखथिबो जदि इंटरनल हेतबो Eg आउ Ia जदि एक्सटर्नल हेतबो Vt आउ IL आ जदि ओपन सर्किट हेतबो E0 एंड If मध्ये रही रिलेशन देखिबा ओके चलो तबे बुझिबा हमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी जनरेटर कोन कोन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रहउची ओके सो आंको मध्यरे देखो डीसी जनरेटर शंट जनरेटर कैरेक्टरिस्टिक रहउची सो एई बरी भाबरे ओपन सर्किट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कहार रहउची ना सीरीज रो ई जो पिक्चर टा मन रखथियो पिक्चर इज पचे तो एडा को कैरेक्टरिस्टिक पिक्चर दे दिथो दैट इज आवर शंट रो एमिति आसीबो इट इज शंट कैरेक्टरिस्टिक सो याकु मध्ये कोन कहदे डीसी सीरीज रो सदा हाई एक बड़ी बड़ी चलथिबो डीसी सीरीज रो एंड याकु कोन कहदे ना कंपाउंड रो जेडे कि ओवर फ्लैट एंड अंडर कंपाउंड ऑफ कम्युनिटी कंपाउंड रो सो ये हला क्यूमुलेटिव कंपाउंड एंड जदी एठु आसी कि हमर कोन आसी ये एठु पळे आसी दैट इज ए फिगरटा हमर हला डिफरेंशियल कंपाउंड तमे एक पिक्चर ओनली मन रखिया जरूरी आउ किछि क्वेश्चन आउट आसी नाही सो क्वेश्चन जदी पचारियो ए पिक्चर ही पचारियो कोडा को जनरेटर बोली पचारियो ओके मन रखिया जरूरी कोडा को जनरेटर सो आउथर देखि दियो शंट जनरेटर हला कोन ए पिक्चर डाला शंट जनरेटर एंड डीसी जनरेटर कोन तो ना फॉर राइजिंग मोड रे थिबो क्यूमुलेटिव कंपाउंड तो ओवरलोड फ्लैट अंडर कंपाउंड थिबो डिफरेंशियल कंपाउंड तो सी ओवरलोड फ्लैट कंपाउंड थिबो ताते एक्स्ट्रा हमर डिफरेंशियल ऑफ कंपाउंड लोडेड ही आसी थिबो ओके नेक्स्ट पॉइंट देखबा हमर कोन आर्मेचर ऑफ रिएक्शन सो आर्मेचर रिएक्शन कहला हम कोन बुझुछे ना आर्मेचर रिएक्शन हला the effect of armature magnetic field flux on the main magnetic flux so effect on the armature of a magnetic field flux ଆଉ main magnetic field flux भितर जहा इफेक्ट आसियो ताको कोन कहथियो आर्मेचर ऑफ रिएक्शन बोली कहबा सो देयर इज टू टाइप ऑफ आर्मेचर रिएक्शन गोटे छि डी मैग्नेटिक आर्मेचर रिएक्शन आउटला क्रॉस मैग्नेटिज्म ऑफ आर्मेचर रिएक्शन सो मन रखितबा आर्मेचर रिएक्शन केते प्रकार ना आर्मेचर रिएक्शन हमर दी प्रकार गोटे होछि हमर कोन ना डी मैग्नेटिज्म ऑफ आर्मेचर रिएक्शन आउट होछि हमर क्रॉस मैग्नेटिज्म ऑफ आर्मेचर रिएक्शन so armature reaction which oppose the main magnetic field is called as a demagnetic armature reaction so मन रखिथबो कोन हेतबो demagnetic हला कोन opposes करिवो काहा करे main magnetic field करे ताको कोन कहदे DMR बोली कहसे बा demagnetising armature reaction क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कोन द आर्मेचर रिएक्शन व्हिच डिस्ट्रॉयड द मेन मैग्नेटिक फील्ड गुटेले डिस्ट्रॉयड करबो आउटेला अपोजिस करबो का कोना मैग्नेटिक फील्ड ताको हम कोन कहदियो जे डिस्ट्रॉय करबो ताको क्रॉस मैग्नेटिज्म जे हमर अपोजिस करबो ताको डीमैग्नेटिज्म ऑफ आर्मेचर रिएक्शन होले हम कहबा एंड इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द सिंबल ऑफ CMR क्रॉस मैग्नेटिज्म आर्मेचर रिएक्शन सो ड्रॉबैक देखिबा ड्रॉबैक र माने हला एडवांटेज मन रखथिबो ड्रॉबैक र माने हला कोन एडवांटेजेस सो एडवांटेज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन कोन द रिजल्टिंग ऑफ एयर गैप इज डिक्रीजिंग आर्मेचर रिएक्शन हेले रिजल्ट एयर गैप टा कोन हो निश्चित कमी जिवो एयर गैप र फ्लक्स टा द हार्मोनिक ऑफ अ कंपोनेंट इंक्रीजिंग जो कंपोनेंट मद हार्मोनिक मद इंक्रीजिंग हे जिवो केतले इन द प्रोड्यूस ऑफ EMF and a core loss of the machine is increased sir core loss of the machine madhya badi jibo and magnetic saturation may be occur at the pole strip जो magnetic saturation रहउची से magnetic saturation कोन तो may be occur हबो magnetic saturation occur केतले ना pole tips रे ही occur हबो क्रिएट हे परिबो and stray losses and iron losses is increasing in the machine जा फलर के stray losses और iron losses कोन हबो increasing हे okay so drawback means disadvantage not advantage so drawback means disadvantages okay so drawback means of a disadvantage sorry for that drawback or mane hela disadvantages
सो मेथड ऑफ रिड्यूसिंग इन आर्मेचर रिएक्शन सो कौन कले आमे आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करि परिबा बाय अरेंजिंग इन ए एक्स्ट्रा एम्पियर टर्न ऑफ ऑन द मैग्नेटिक पोल सो मैग्नेटिक पोल रे आमे एक्स्ट्रा कोन बा टर्न आमे दबा को पड़िबो एक्स्ट्रा एम्पियर टर्न ऑफ दबा को पड़िबो जापर मैग्नेटिक पोल रे सेकंड थिंग्स हला कोन बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक पोल जदि मैग्नेटिक पोल लेंथ हमें बढ़े दउछे लेंथ पोल सूज रो ताल कोन हो द फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द एयर गैप इज यूनिफॉर्म फ्लक्स जो क्रिएट होतबो यूनिफॉर्म अनयूनिफॉर्म हो जिवो by the placing in a enter of a pole between the main poles inside the rotating of a machine से कौन कहछे by place interpole between कौन तो main pole को जदि हम प्लेस करबा सेथरे मध आर्मेचर रिएक्शन मध कमी पारे and by using a compensating winding very important compensating winding करी के मध हमें त कौन करछे आको आर्मेचर रिएक्शन को कम भी करी पारिबा ओके नेक्स्ट देखिबा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल ऑफ एंगल एंड मैकेनिकल ऑफ एंगल सो इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल भितर कोन रिलेशन ऑफ अच्छा हम जानबा सो वेरी दीटा फार्मूला मन रखिथबो सदाळे मन रख कोन ना थीटा ई इलेक्ट्रिकल ई माने मींस इलेक्ट्रिकल t/2 थीटा ऑफ m t/2 थीटा ऑफ m एंगल ओके सो थीटा ई माने कोन इलेक्ट्रिकल थीटा m माने कोन मैकेनिकल सो लीकेज कोएफिशिएंट कोन लीकेज कोएफिशिएंट हैला हमें लैम्ब्डा लीकेज कोएफिशिएंट इना हलो कोन लैम्ब्डा बोले हम कहछे सो टोटल फ्लक्स बाय यूजफुल ऑफ फ्लक्स सदर मन रखतबो टोटल फ्लक्स बाय यूजफुल फ्लक्स इज ग्रेटर देन ऑफ 1 सदा वाले लीकेज कोएफिशिएंट कोन हेतिबो ग्रेटर देन ऑफ 1 एक करू अधिक थिबो एंड कैलकुलेशन ऑफ एम्पियर टर्न जदि हमें कोन से एम्पियर टर्न कैलकुलेशन करछे केमते टोटल एम्पियर टर्न हैला 80 by t total ampere turn equal to 80 t by 2 by pole by kahar na pole is equal to ZIA divided by 2PA divided by 2PA so current kon asibo listen the current asibo I is equal to IA by I is equal to armature current by total of armature sorry A okay not in a armature current this one is the A so हमें फाइ जेड एन पी ए इसु जिंस टर्म मन रखिले तापर देखि तुमको इजी हे जिवो बुझी हे जिवो कथा कोनरा कोन जाउची ओके सो डी मैग्नेटिक ऑफ एम्पियर टर्न कोन ना डी मैग्नेटिक एम्पियर टर्न हैला ओके डी मैग्नेटिक हैला कोन ना 80 डी बाई जेडे कि हम डी मैग्नेटिक सो डी मैग्नेटिक हैला कोन 80 डी बाई पोल इक्वल टू जेड आई बाई ए आर केते ना थीटा बाई 360 डिग्री ये 360 डिग्री डी मैग्नेटिक एम्पियर टर्न पोल सो सेंति क्रॉस मैग्नेटिक केते आसीबो ना क्रॉस मैग्नेट एटीसी आसीबो बार पोल इक्वल जेड आई बाई ए जेड आई बाई 1 बाई 2p माइनस ऑफ थीटा बाई 360 माइनस ऑफ केते थीटा बाई 360 डिग्री सेंति कंपेंसेटरी वाइंडिंग जदि हम यूज करछे कोन आसीबो ना 80 बाई t कंपेंसेटरी वाइंडिंग हैला pole arc by pole pitch into 80 in total by pole ओके इसो जिनसरा हमर कंपेंसेटरिंग रा आ डीमैग्नेटिज्म क्रॉस मैग्नेटिज्म इसो जिनसटा हमें जानिबा नियति जरूरी बा फार्मूला वाले हमें कहछ सो एबे जानि हमर नेक्स्ट पॉइंट इज आवर कम्यूटेशन सो कम्यूटेशन हमें कोन पे व्यवहार करछ व्हाट इज कम्यूटेशन द कम्यूटेशन प्रोसेस इन्वॉल्व चेंज द जनरेटिंग ऑफ अल्टरनेटिंग करंट टू एक्सटर्नली बाय अवेलेबल इन डायरेक्ट करंट सो हमें जतले कम्यूटेशन करोचे एक्सटर्नल अल्टरनेटिंग करंट रो हमें कोन करूचे ना डीसी करंट को जोटा कि एक्सटर्नली बाहर अवेलेबल रही अछि सो कोन रहचे ना कम्यूटेटर ऑफ फॉलोइंग ऑफ टू टाइप्स जो कम्यूटेशन हमें करछे दी प्रकार कम्यूटेशन करछे गुटे होची स्मूथ कम्यूटेशन आउट होची हमर कोन रफ कम्यूटेशन स्मूथ कम्यूटेशन कोन ना व्हेन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन आर्मेचर कॉइल occur in gradually so जेतेबेले हमर व्हेन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सो वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट आज के डेट रे जो कैरेक्टर क्वेश्चन करूची ओएसपीसी ओपीटी सेल सेट क्वेश्चन डायरेक्ट थुइथिबो कोन थोर ना डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द आर्मेचर कॉइल occur in gradually is called as a smooth commutation rough commutation की अदर किस मेथड दे देथिबो जोटा कि से ए तो केमिति जानिबा ना स्मूथ रो हमें माने हला कोन होबा स्मूथ रो अर्थ कोन बुझ स्मूथ में वेरी smooth and it is the direction of electrical current flow the armature coil occur in gradually ji gradually flow करे और rough रो कोन when the direction of electric current flow in armature coil change in rapidly so rapidly जोटा चेंज होथबो सेटा को हमें रफ कम्यूटेशन कहबा
आ धीरे धीरे ग्रेजुअली जोटा चेंज होतो ताको हमें स्मूथली कम्यूटेशन बोली हमें कहबा। ओके, नेक्स्ट देखबा मेथड ऑफ इंप्रूवमेंट। सो मेथड ऑफ इंप्रूवमेंट कोन? हाँ, मेथड ऑफ इंप्रूवमेंट देखिबा। मेथड ऑफ इंप्रूवमेंट कोन? हमें डिफरेंट मेथड रे हमें इंप्रूवमेंट करे परिबा। कोन? गुटे होची हमें रेजिस्टेंस मेथड इंप्रूवमेंट करे परिबा कम्यूटेशन को। आउट कोन? ईएमएफ मेथड रे मध्ये हमें कम्यूटेशन को भी मध्ये इंप्रूवमेंट करे परिबा। ए जो दीटा मेथड रे हमें इंप्रूवमेंट करेबा कोन कोन से विषय टिके जानिबा। So in this method carbon brush with a high resistance are used। जो रेजिस्टेंस मेथड रे हमें कोन यूज करछे ना कार्बन ब्रशेस विथ हाई रेजिस्टेंस आर यूज। कार्बन ब्रशेस सहित हाई रेजिस्टेंस को हमें व्यवहार करूचे। ड्यू टू द हाई रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रशेस द करंट इन द शॉर्ट सर्किटेड कॉइल चेंज इन स्लोली। जेहेतु हमें हाई रेजिस्टेंस ऑफ कोन यूज करछे ऑफ द ब्रशेस यूजेस करछे जहा फल कि करंट इन द शॉर्ट सर्किट करंट कोन हो शॉर्ट सर्किट कॉइल रे चेंज इन स्लोली धीरे धीरे चेंज हो जहा फल रिजल्ट इन कोन हो नेग्लेजिंग इन स्पार्क बहुत कम स्पार्क हबो। एंड स्मूथ कम्यूटेशन कैन बी अचीव बाय यूजिंग इन ए हाई रेजिस्टेंस कार्बन ब्रश। ताले हमें स्मूथ जो कम्यूटेशन यूज करछे केमिति करछे ना बाय यूजिंग इन ए हाई रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन ब्रश। स्मूथ कम्यूटेशन जो हम कहूचे स्मूथ कम्यूटेशन और रफ कम्यूटेशन। सो हाई रेजिस्टेंस हम यूजेस करके हम स्मूथ कम्यूटेशन ऑफ करछे। सो आउट हला ईएमएफ मेथड कोन ना इन दिस मेथड to neutralize the effect in this method to neutralize the effect of the reactance of a voltage electromotive force is induced in the opposite of a direction with the help of a car or help of a interpole with the help of a interpole। in a DC generator small interpole are used between the main pole। so DC generator हम कौन यूज कराउची small interpole are used in the main pole रे मन रखिबो। so it is number of the same that the main pole। so main pole जहां नंबर थिबो यार मध्य नंबर इज very simple। आउथर मन रखिबा कोन देछि ना आउथर देखिबा। हाँ, this in this method by EMF method जो हमें व्यवहार करछे to neutralize of the effect of a reactance of a voltage। so reactance voltage को हमें neutralize करेबा केमिति करेबा ना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माध्यम में induce in the opposite direction the help of interpole। जेपले इंटरपोल रो सहायता रे हमें ऑपोजिट डायरेक्शन रे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जोडे के तैयारी करिबा। आ सेकंड पॉइंट कोन ना इन ए डीसी जनरेटर स्मॉल इंटरपोल आर यूज बिटवीन द मेन पोल। सो हमें जानि समझते डीसी जनरेटर रे कोन इंटरपोल व्यवहार कराउची इंटरपोल व्यवहार कास व्यवहार करछे दीटा मेन पोल मझी रे ही व्यवहार करा जाउची। सो इट नंबर ऑफ द सेम दैट द मेन पोल जोडा कि सेम ऑफ द सपोज मोर एडा रहला जनरेटर ये रहला हमर मेन पोल चारिटा मोर चारिटा पोल रहला। ओके मन रखिथि। सो चारिटा पोल जदि रहला आको मझी रे गोटे पोल आउट पोल मझी रे म कोन करबी इंटरपोल। सो इंटरपोल केतटा रहबो ना मेन पोल जतटा रहबो मेन पोल जतटा रहबो इंटरपोल मध्ये सेतटा रहबो। ओके, so next point देखिबा इंटरपोल एंड ए कंपेंसेटिव ऑफ वाइंडिंग। सो इंटरपोल एंड कंपेंसेटिव वाइंडिंग कोन इंटरपोल कोन हम जानिबा ठीक फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरपोल लेला दे आर प्लेस बिटवीन इन मेन फील्ड पोल ऑन द ईयर यह कर मेन फील्ड मजे रे ही आपको प्लेस करा जायसी। एंड इंटरपोल इज ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज क्रॉस मैग्नेटिज्म एंड रिएक्टेंस वोल्टेज। जतले हमें क्रॉस मैग्नेटिज्म ऑफ एंड रिएक्टेंस वोल्टेज अकर होबो दैट मोमेंट इंटरपोल कोन होबो automatically neutralize and these pole are connected in a series with the armature। so को pole दा interpole हमर series सहित connected है। ई क्वेश्चन दा एग्जाम रे ही आसे मन रखतबो विथ आर्मेचर सहित सीरीज रे कनेक्टेड है कोन ना इंटरपोल्स। ओके, एंड वाइंडिंग एंड सीरीज फील्ड ऑफ वाइंडिंग जो हिच हम इंटरपोल वाइंडिंग आ हमर कार आर्मेचर वाइंडिंग दा सीरीज रे प्लेस कराइछि। and these are also known by the name of auxiliary pole। आपको हमें अदर वर्ड कोन कहउछे ना auxiliary poles मध्ये कहउछे and commutator poles मध्ये कहउछे and extra pole भी कहउछे किबा small pole मध्ये कहउछे। and the number of interpole is equal to the main pole। ए जिनसरा पॉइंट भी जानिले नंबर ऑफ interpole equal to the main pole। so compensating winding कोन ए compensating winding is auxiliary winding। हमें compensating winding गोटे यूजेस कराउची जेटा कि हमें auxiliary winding बोले हमें embedded बोले कहउचे। embedded slot located in the face of the main pole। main pole रो फेस को देखि के
फेस को जोटा थिबो सेपट साइड रे हम कोन करिया compensated of winding हमको व्यवहार करबा so this winding also place on a field pole ए field pole भितरे को winding place करा होचे ना compensated winding को place करा छै like in केमिति connected थाए ना series field winding से connected थाए and connected in also series रे so compensating winding also connected in a series with का से ना armature of winding से armature of winding से so that the direction of a current of enough the compensating of a conductor in any pole of a phase will be opposite to the direction of the current will be opposite कोन बा direction of the current to the adjacent of the armature कहा माध्यम रे देखिए ना armature conductor माध्यम देखिए so compensator winding is used large size of machine which is has a more load fluctuation जो जगह रे कि लोड फ्लक्चुएशन होथुबो से जगह में compensated of winding यूज करबा एग्जांपल ऑफ बड़ बड़ लार्ज ऑफ मशीन रा हम ताको यूजेस करा जाता है so next point देखिबा loss of a DC generator so different type of losses are be there so according to our machine रा जो कंस्ट्रक्शन है इसी कंस्ट्रक्शन रे लॉस मत रही कौन लॉस रही जानिबा one is our copper losses और variable losses copper losses को अगर ना कौन कहती variable losses बोली कहै सेकंड पॉइंट इज हमर आयरन लॉसेस और कांस्टेंट लॉसेस आयरन लॉसेस को कौन कहै ना कांस्टेंट लॉसेस और मैकेनिकल लॉसेस बोले हमें कहै कांस्टेंट लॉसेस और मैकेनिकल लॉसेस लास्ट इज हमर कोन ब्रश कांटेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस लॉसेस और मते उठ रहउची जेटा कि ब्रश कांटेक्ट रेजिस्टेंस लॉस बोले हमें कहै सो चलन देखिबा कॉपर लॉसेस कोन ना कॉपर लॉसेस हमें कहउती ना आई ए स्क्वायर आर ए सो आर्मेचर लॉस कॉपर लॉसेस ता कोड करे होची ना आर्मेचर लॉस always में मन रखियो 30 to 40% of a total loss of कार of a total loss मन रखियो total loss ओके कौन यूज करना कॉपर लॉस सो शॉर्ट फील्ड रे मतलब कॉपर यूज करा होची सो कॉपर फील्ड दे आई एस स्क्वायर आर एस एच सीरीज फील्ड मतलब आई एस ई स्क्वायर एंड आर एस इंटरपोल मतलब आई ए स्क्वायर इनटू आर आई पी so field copper loss it contribute about in 20 to 30% of the full load of losses so full load losses जहां भी हबो तार 20% to 30% हमर कोन losses हबो copper losses मते हबो ओके देन iron losses कोन जानिबा iron losses इज कैटेगरी हम दीटा रहिछि गोटे होछि हमर हिस्टोसिस losses अनदर इज हिटी करन losses so हिस्टोसिस losses ता मन रखिथियो कोन फार्मूला टा WH is equal to efficiency of B M maximum 1.6 frequency into volt okay and WE means eddy current eddy current KE B square of M and F square मान frequency square and T square and P मन रखिथिबो so it's the very important okay ये दीटा फार्मूला very important एग्जाम रे बहुत थोर क्वेश्चन पचारि आगो हम डिस्कशन कले मद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिया पाइबा सो मैकेनिकल लॉसेस कोन ना मैकेनिकल लॉसेस हला स्ट्रे लॉसेस जोडा कि आयरन लॉसेस आ मैकेनिकल लॉसेस ऑफ कॉमन हे कि रहि सेटा हम कोन कहछे स्ट्रे लॉसेस बोली कहछे बा हमें कांस्टेंट लॉसेस कोन कहछे ना आयरन लॉसेस प्लस मैकेनिकल लॉसेस प्लस शॉर्ट फील्ड लॉसेस दैट इज कॉल्ड ऑफ कांस्टेंट लॉसेस बोली कहछे जो कांस्टेंट लॉसेस हो कि स्ट्रे लॉसेस हो से लॉसेस फिर हमर कोथरे आछे ना मैकेनिकल लॉसेस से हमर बिलोंग करछथि सो मैकेनिकल लॉसेस इज इक्वल टू केते रहे जरूर ना 10% टू 20% 10% टू 20% ऑफ कार लोड लॉसेस कार ना लोड लॉसेस आ कॉपर लॉसेस केते रहबा दरकार ना 30 टू 40% 32% ऑफ द टोटल लॉसेस ओके देन नेक्स्ट देखबा स्ट्रे लॉसेस आर अज्यूम इन बाय इन 1% सो स्ट्रे लॉसेस केते थे अज्यूम करा जाय ना 1% ऑफ assumed करा जाय so next is a very important losses that is called as a brush contact resistance of losses जो कार्बन ब्रश हमर रेजिस्टेंस मीटर so जत हमर कम्यूटेटर कांटेक्ट आछबा हमें कलेक्ट द करंट आछ दैट मोमेंट रे मधे किछि ड्रॉप हो जाय वोल्टेज ड्रॉप जोटा कि 1 वोल्ट पर बोले हमें कंसीडर करू छै केते ना 1 वोल्ट पर ब्रश गोटे वोल्ट रे पर ब्रश रे गोटे वोल्ट लॉसेस हुए सेमति जतुडा ब्रश लागिथिबो सेतुडा लॉस मधे हबो एंड फॉर ए कार्बन एंड ग्राफाइट जे कार्बन और ग्राफाइट की तुलना करिबा दैट इज ऑफ 1 वोल्ट बोले हमें कंसीडर करिबा ओके नेक्स्ट पॉइंट इज एप्लीकेशन ऑफ डीसी जनरेटर सो लास्ट ऑफ ऑल हमें एप्लीकेशन ऊपर पढिबा एप्लीकेशन माने कोन ना सेपरेटली सेटेड जनरेटर हमें कोठ व्यवहार कराउची
work with electro analysis of electrochemical of work, amplification of work, word Leonard of method of speed control. So ako ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ନା word Leonard of method of speed control ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ଆନାଲିସିସ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ମେକାନିକାଲ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ଆମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ ୱାର୍କ ମଧ୍ୟ କାମ କରାଯାଉଛି। सो सॉन्ड जनरेटर कोड व्यवहार करा होचे ना बैटरी चार्जिंग। सॉन्ड जनरेटर कोन बैटरी चार्जिंग मेथड रे, जनरेटर डीजल जनरेटर रे सेट रे एंड पेट्रोल जनरेटर सेट रे एंड कोड यूज करा होचे वेयर कांस्टेंट वोल्टेज इज रिक्वायर्ड। जतले कांस्टेंट वोल्टेज दरकार पड़िबो सेतले सॉन्ड जनरेटर, जतले कांस्टेंट स्पीड आसी जीवो सीरीज मोटर पळे आसीयो पिले माने। सो कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट वोल्टेज मधे डिफर मन रखथिबो। सो कांस्टेंट वोल्टेज यदि हम दरकार पड़ियो दैट इज शॉर्ट जनरेटर। एंड डीसी सीरीज जनरेटर कौन सीरीज बूस्टर, जोड़े कि हमें बूस्टर बोले हमें कहते सीरीज बूस्टर, आर्क लाइटनिंग जनरेटर एंड रीजेनरेटिंग टाइप एंड ब्रेकिंग रीजेनरेटिव ब्रेकिंग टाइप एंड फील्ड एक्साइटेड ऑफ हमें यूज करछे कोठे ना डीसी सीरीज जनरेटर। सो आउरी मध्ये रहला कोन अंडर कंपाउंड ऑफ जनरेटर कोन ना अंडर कंपाउंड जनरेटर इज यूज supply the electric of a power to the load which is nearest from the generator। so generator ठार पाखरे जे रहथिबो से जागा रे ही हम आकु यूज करू supply to electric power to the load पाखरे जोडा थिबो which is nearest from the generator, जोडा कि हम कहउचे जनरेटर रो पाखरे। and flat compound कोन level or flat compound generator use for short distance electric power supply पे हम कोड यूज करछे ना हम flat compound generator यूज से करछे। सो सप्लाई टू द नियरेस्ट यूजिंग सप्लाई टू द कहार लोड पाखे जोडा थियो ताकू कोन कोड यूज करबा अंडर कंपाउंड बोले हम यूज करबा। ओके देन ओवर कंपाउंड कोन कम्युनिटी कंपाउंड ऑफ जनरेटर, जोडा कि ओवर कंपाउंड कोचे मोस्टली यूज इन डीसी सप्लाई। आकु डीसी सप्लाई रे खास करके यूजेस करे जाय थाए एंड यूज इन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। सो जेतोले हमर इलेक्ट्रिकल पावर लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल करबो दैट मोमेंट हम कोन को यूज करबा ओवर कंपाउंड ऑफ जनरेटर व्यवहार करबा। देन डिफरेंशियल कंपाउंड दिस जनरेटर इज यूज्ड फॉर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर और आर्क ऑफ वेल्डिंग पे हमें व्यवहार करछे डिफरेंशियल ऑफ कंपाउंड ऑफ जनरेटर बिकॉज ऑफ द वेल्डिंग ऑफ रिक्वायर्ड इन लो वोल्टेज 60 टू 80 वोल्टेज। वेल्डिंग टा केते रिक्वायर पड़िबो 60 रु 80 वोल्ट एंड हाई करंट केते आसीबो 300 टू 600। जतले हमर वोल्टेज कमी जीवो सेतले करंट कोन हो निश्चित बढ़ी जीवो। सो हाई करंट पे हेले हमें 300 टू 600 एंड लो वोल्टेज हेले हमर कोन इज 60 टू 80 वोल्ट। सो लास्ट ऑफ ऑल देखिबा हमें एफिशिएंसी ऑफ अ डीसी जनरेटर। एफिशिएंसी कहले कोन बुझुचे ना आउटपुट बाय इनपुट बोली बुझुचे। सो आउटपुट कहले कोन बुझिबा आउटपुट रो मीनिंग हैला हमें इनपुट माइनस ऑफ लॉसेस डिवाइडेड बाय कोन हो सेम इनपुट रहइबो। देखो ए रहला आउटपुट रो वैल्यू हैला कोन इनपुट माइनस ऑफ losses। so output is equal केते आसीबो input minus of losses मन रखिथिबो। the condition of maximum efficiency in a DC generator is equal कोन variable losses is equal to constant losses। केबेले constant losses equal to variable losses होबा नै unless number रखियो variable losses equal to constant losses। so variable losses कोन ना I square r। so constant losses कोन तमेले टिके आगुर पढिलो constant losses आउ variable losses कोड हमें कहउछि। ओके सो कांस्टेंट लॉसेस कोन ना वेरिएबल लॉसेस। सो हमर जते कॉपर लॉसेस आसीबो सेटा हला हमर कांस्टेंट एंड आयरन लॉसेस आसीबो कोन हमर वेरिएबल ना कोन ना कॉपर लॉसेस हला हमर कोन वेरिएबल एंड आयरन लॉसेस हला हमर कांस्टेंट। ओके सो थैंक यू वेरी मच। इलेक्ट्रिशियन स्टडी पॉइंट रे विजिट करथरो वाच करथरो आपन बहुत बहुत धन्यवाद। आपन हम वीडियोटा को लाइक करबे शेयर करबे एंड सब्सक्राइब करबे। आ जदि किछि चेंज करिया चाहछन्ती बा मॉडिफिकेशन करिया चाहछन्ती हम कमेंट माध्यम रे जणाइबे। थैंक यू वेरी मच। पुन देखा हबो नुवा टॉपिक रे नुवा क्लास।